Subscribe our channel. Dawn vocabulary with Urdu meaning. In the past few weeks, as the upsets and upheavals of the FIFA World Cup have played out in Qatar, attention has also been paid to the deplorable conditions facing migrant workers in the kingdom. Foreign news outlets have spent much time drawing attention to the tens of thousands of workers who have built the venues and who continue to toil behind the scenes to ensure that fans gathered in the Middle East have a good experience. The reality has been clear to everyone. The laboring classes in the kingdom are imported from elsewhere, Pakistan, Nepal and India, among others. These workers together form an underclass whose humanity is treated as secondary to everyone else. Things are not much different next door in Dubai, in the United Arab Emirates. Whatever cruelties take place in Qatar take place just as frequently in Dubai. And, just like all the other oil-producing economies in the region, the UAE has also been getting ready for a post-oil world in which its citizens, accustomed as they are to the oil largesse that has improved standards of living for generations, will not see the cash rolling in. In that future world, these rich kingdoms must now communicate to their citizens that they will have to work to earn money, a seemingly novel concept for those who enjoy Emirati citizenship. Currently, up to 80% of the workforce is composed of foreign citizens who do everything, from writing complicated code to sweeping the floors. To make this transition from collecting money to earning money somewhat easier, there must be jobs for this new workforce. Even those who have engineered the scheme appear to realize that the blessed Emirati citizens are not going to be able to compete for jobs on the open market. The low employment rates among Emirati citizens means few even have the training to hold positions of any sort. In order to fix this problem of low employment and little training, the Emirati government has decided to do what it always does when confronted with a problem: throw money at it. Private companies operating in the UAE have been told that all private companies that have more than 50 employees must now make sure that 2% of their workforce is made up of Emirati citizens. The objective is to increase this figure to 10% by 2025. The private companies that do not comply with this 2% quota have been told that from January 1st, they will be fined 6,000 dirhams per month per Emirati employee not hired. Compliant firms will be eligible for several benefits, including up to 80% discount in the Ministry of Human Resources and Emiratization service fees. The goal is to increase the number of Emirati employees who will then receive on-the-job training for the task as well. Among the incentives for Emirati citizens, the government will pay up to 800 dirhams towards the care of each child of Emiratis working in the private sector. The scheme is applicable until the children reach the age of 21. Emiratis who lose their jobs in the private sector because of circumstances beyond their control will receive an unemployment benefit for a period of 6 months. How will entitled Emirati citizens square working a job with the special status they are used to expecting for themselves? In ordering private companies to hire 2% Emiratis, the government is hoping that these same lucky citizens will learn to do at least some of the jobs needed to keep private enterprise functioning. By the time the first 5 years of the program pass, there will be at least some Emirati citizens who will be used to having a job. The government, however, appears to have overlooked one crucial factor: how will entitled Emirati citizens square working a job with the special status that they are used to expecting for themselves? One recent controversy illustrated the situation well. A few days ago, a private company that provides workers for all sorts of jobs advertised a position for a sandwich maker. The tasks of this sandwich maker were listed therein, as was the fact that the job fell under the 2% quota that the government was demanding be reserved for Emirati citizens. The government, it appears, had considered the scenario of Emirati citizens wanting jobs but not having them, but it had not given consideration to the possibility that private companies could reserve jobs but not find Emirati citizens to fill them. The fact that the job of a sandwich maker was being reserved for an Emirati citizen provoked outrage among many Emiratis,
who complained that it was either insulting because the job of a sandwich maker was beneath their elite status or because it appeared to make fun of the government rule which pretended it was just so easy to increase employment among Emiratis. Either way, no one appears to have been happy with the posting, which has since been taken down. An inquiry into the matter of a company trying to hire an Emirati sandwich maker has also been ordered. A self-sufficient UAE in a post-fossil fuel world will have to rely on its own to make sandwiches and everything else. That fossil fuel-free future is something the world's brightest minds are working on and which may be here sooner rather than later. The UAE government may have come up with a well-resourced scheme to make private companies hire Emiratis, but it has yet to resolve how Emiratis can be made to work. In the meantime, Pakistanis who have long been making sandwiches and many other things for the citizens of the UAE will be happy to continue to do so. The writer is an attorney teaching constitutional law and political philosophy. Published in Dawn, December 14, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जहां कतर में फीफा वर्ल्ड कप के अपसीट और उथल-पथल सामने आए हैं, वहीं ममलकत में तारिकीन वतन कारकुनों को दरपेश अफसोसनाक हालात की तरफ भी तवज्जो दी गई है। गैर मुल्की खबर रसां इदारों ने उन हज़ारों कारकुनों की तरफ तवज्जो मबजूल कराने में ज़्यादा वक्त सिर्फ किया है जिन्होंने मकामात तामीर किए हैं और जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए पर्दे के पीछे मेहनत जारी रखे हुए हैं कि मशरिक़ वस्ती में जमा होने वाले शायखीन को एक अच्छा तजर्बा हासिल हो। हकीकत सब पर वाज़े हो चुकी है। ममलकत में मजदूर तबके को कहीं और से दरामद किया जाता है, पाकिस्तान, नेपाल और भारत दूसरों के दरमियान। ये मजदूर मिलकर एक पसमानदा तबका तश्कील देते हैं जिसकी इंसानियत को हर एक के लिए सानवी समझा जाता है। दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात में अगले दरवाजे पर चीज़ें ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। कतर में जो भी जुल्म होता है वो दुबई में भी अक्सर होता है। और खित्ते में तेल पैदा करने वाली दीगर तमाम मईशतों की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात भी तेल के बाद की दुनिया के लिए तैयार हो रहा है जिसमें इसके शहरी, जैसा कि वो तेल के बड़े पैमाने पर आदी हैं जिसने नस्लों के लिए मेयार जिंदगी को बेहतर बनाया है, नकल रकम में रूलिंग नहीं देखेंगे। मुस्तकबिल की इस दुनिया में इन अमीर रियासतों को अब अपने शहरियों को ये बताना होगा कि उन्हें पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। अमाराती शहरियत से लुत्फ अंदोज होने वालों के लिए एक बज़ाहिर नया तस्वुर। इस वक्त 80% अफरादी कुव्वत गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है जो सब कुछ करते हैं, पेचीदा कोड लिखने से लेकर फर्श को साफ करने तक, पैसा जमा करने से लेकर पैसा कमाने तक। इस मुंतकिली को किसी हद तक आसान बनाने के लिए इस नई अफरादी कुव्वत के लिए मुलाजमतें होनी चाहिए। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस स्कीम को इंजीनियर किया है वो भी इस बात का एहसास करते नजर आते हैं कि बाबरकत अमाराती शहरी खुली मार्केट में मुलाजमतों के लिए मुकाबला करने के काबिल नहीं होंगे। अमाराती शहरियों में रोजगार की कम शरह का मतलब यह है कि बहुत कम लोगों को किसी भी किस्म के ओहदों पर फाइज होने की तरबियत भी हासिल है। कम रोजगार और कम तरबियत के इस मसले को हल करने के लिए अमाराती हुकूमत ने फैसला किया है कि वो हमेशा एक मसला का सामना करने पर क्या करता है, इस पर पैसा फेंक दे। मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाली निजी कंपनियों से कहा गया है कि वो तमाम निजी कंपनियां जिनके 50 से जायद मुलाजमीन हैं वो अब इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी 2% अफरादी कुव्वत अमाराती शहरियों पर मुश्तमिल हो। इसका मकसद 2025 तक इस आदादो शुमार को 10% तक बढ़ाना है। इस 2% कोटे पर अमल न करने वाली निजी कंपनियों को बताया गया है कि 1 जनवरी से उन्हें हर अमाराती मुलाजिम पर 6000 दिरहम माहाना जुर्माना आयद किया जाएगा। तामील करने वाली कंपनियां मुताद्दिद फवाइद की अहल होंगी जिनमें वजारत इंसानी वसाइल और अमारात की सर्विस फीस में 80% तक की छूट शामिल है। इसका मकसद अमाराती मुलाजमीन की तादाद में इजाफा करना है जो इसके बाद इस काम के लिए मुलाजमत की तरबियत भी हासिल करेंगे। अमाराती शहरियों के लिए मुराद में से हुकूमत निजी शोबे में काम करने वाले अमारातियों के हर बच्चे की देखभाल के लिए 800 दिरहम तक अदा करेगी। ये स्कीम इस वक्त तक लागू होती है जब तक बच्चे 21 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते।
अमाराती जो अपने कंट्रोल से बाहर के हालात की वजह से निजी शोबे में अपनी मुलाजमतों से महरूम हो जाते हैं, उन्हें 6 माह की मुद्दत के लिए बेरोजगारी का फायदा मिलेगा। अमाराती शहरी किस तरह काम करने के हकदार होंगे जो खुसूसी हैसियत के साथ वो अपने लिए तवक्को करने के आदी हैं। निजी कंपनियों को 2% अमारातियों की खिदमात हासिल करने का हुक्म देते हुए हुकूमत को उम्मीद है कि यही खुशकिस्मत शहरी निजी इंटरप्राइज को फाल रखने के लिए दरकार कम अज कम कुछ मुलाजमतें करना सीखे। प्रोग्राम के पहले 5 साल गुजरने तक कम अज कम कुछ अमाराती शहरी होंगे जो मुलाजमत के आदी होंगे। ताहम ऐसा लगता है कि हुकूमत ने एक अहम उनसर को नजरअंदाज कर दिया है। अमाराती शहरियों को किस तरह खुसूसी हैसियत के साथ काम करने का हक मिलेगा जिसकी वो अपने लिए तवक्को करने के आदी हैं। एक हालिया तनाज़ा ने सूरत हाल को अच्छी तरह से बयान किया। चंद रोज कबल एक निजी कंपनी जो हर किस्म की मुलाजमतों के लिए वर्कर्स फराहम करती है ने सैंडविच मेकर के लिए एक पोजीशन का इश्तिहार दिया। इस सैंडविच बनाने वाली कंपनी के कामों को इसमें दर्ज किया गया था, जैसा कि हकीकत ये थी कि यह मुलाजमत 2% कोटा के तहत आती है जिसका मुतालबा हुकूमत अमाराती शहरियों के लिए मुख्तस करने का मुतालबा कर रही थी। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अमाराती शहरियों के मंजरनामे पर गौर किया था जो मुलाजमतों के ख्वाह हैं लेकिन उनके पास नहीं हैं, लेकिन इसने इस इम्कान पर गौर नहीं किया था कि निजी कंपनियां मुलाजमतें महफूज कर सकती हैं लेकिन उन्हें भरने के लिए अमाराती शहरियों को तलाश नहीं कर सकती हैं। यह हकीकत के सैंडविच बनाने वाली कंपनी की नौकरी एक अमाराती शहरी के लिए मखसूस की जा रही थी। बहुत से अमारातियों में गम और गुस्सा पैदा हुआ, जिन्होंने शिकायत की कि यह तो तौहीन आमेज है क्योंकि सैंडविच बनाने वाले की मुलाजमत उनकी अशराफिया की हैसियत से कम है, इस वजह से कि यह सरकारी हुक्मरानी का मजाक उड़ाने के लिए जाहिर होता है, जिसने जाहिर किया कि अमारातियों के दरमियान रोजगार में इजाफा करना इतना आसान है। किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि कोई भी पोस्टिंग से खुश नहीं है, जिसके बाद से इसे हटा दिया गया है। अमाराती सैंडविच बनाने वाली कंपनी की खिदमात हासिल करने की कोशिश के मामले की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है। जीवाश्म ईंधन के बाद की दुनिया में एक खुद कफील मुत्तहिदा अरब अमारात को सैंडविच और बाकी सब कुछ बनाने के लिए अपने आप पर इन्हिसार करना पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन से पाक मुस्तकबिल एक ऐसी चीज है जिस पर दुनिया के रोशन तरीन दिमाग काम कर रहे हैं और जो बाद में जल्द ही यहाँ हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत निजी कंपनियों को अमारातियों की खिदमात हासिल करने के लिए एक अच्छी तरह से वसाइल वाली स्कीम के साथ आ सकती है, लेकिन इसने अभी तक ये हल नहीं किया है कि अमारातियों को किस तरह काम करने के लिए बनाया जा सकता है। दरियासना पाकिस्तानी जो तवील अरसे से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों के लिए सैंडविच और बहुत सी दूसरी चीजें बना रहे हैं, वो ऐसा करने के लिए जारी रखने में खुश होंगे। मजमून निगार आईनी कानून और सियासी फलसफे की तालीम देने वाले वकील हैं। डान अखबार में शाये शुदा 14 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.